Guys, we are going to discuss May June 2017 variance 22. The composition of atom and ions can be determined from knowledge of atomic number, nucleon number, and charge. Complete the table. अगर atomic number 3 है और number of electron 2 हैं, तो इसका मतलब number of protons आपके पास 3 होंगे, right? Number of neutrons आपने देखे, तो mass number 6 है, atomic number 3 है, 6 minus 3 becomes 3. So nucleon number is going to be 6. ठीक है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 हैं तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 26 होगा. अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका मतलब ये आयरन होगा. एटॉमिक नंबर जैसे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है 3, ऐसे हम यहाँ पर 26 लिखेंगे. जिस तरह से न्यूक्लियन नंबर 6 लिखा है, हम भी न्यूक्लियन नंबर आयरन का लिखेंगे. एंड फॉर दैट मैं 32 और 26 दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास न्यूक्लियन नंबर आ जाएगा व्हिच इज 56, 58. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियन नंबर लिख दीजिए आप 58. Boron occurs naturally as a mixture of two stable isotopes, B10, B11. The relative isotopic masses and percentage abundances as shown. Define the term relative isotopic mass. The mass of an atom of isotope compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12. Isotope. Calculate the relative isotopic mass of B11. Give your answer to 6 significant meters. Show your work. Okay. So मुझे relative atomic mass of boron periodic table से पता चलेगा, which is 10.8. So this is going to be the AR of boron, which is given in periodic table. Mass of first isotope is 10.012. You need to find out the abundance, so let's suppose it's X. Plus mass of second isotope, which is 19.78. Abundance of second isotope is 80.22. And let's assume the total abundance is going to be 100%. So यहाँ से आपके पास X की वैल्यू हो जाएगी 10.9941. Since उन्होंने 6 significant figures बोला है, इसलिए मैं आंसर में 6 significant figures नहीं दिया है. Wait, my bad. This is mass of first isotope, abundance of first isotope. So 129 into 19.78 plus mass of second isotope
needs to be calculated. Abundance of second isotope is 80.22 divided by 100. तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.9941. That's my answer finally. Explain why nitrogen gas is so unreactive. Because nitrogen is non-polar and also it contains triple bond, which has high bond energy value. Despite the low reactivity of nitrogen, oxides of nitrogen are in the atmosphere through both natural and man-made processes. Explain why oxides of nitrogen can be produced by internal combustion engine. तो आप बताइए नाइट्रोजन किस तरह से लिखिए इन इंटरनल कंबस्शन इंजन nitrogen and oxygen react together at high temperature. और high temperature की the reason आपको पता है because of the strong covalent bonds in nitrogen and oxygen molecule. State and explain using a suitable equation how oxide of nitrogen produced by internal combustion engine can be prevented from reaching the atmosphere. So आप कह दीजिए use catalytic converter. Suitable equation कह रहे हैं इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2NO plus 2CO arrow N2 plus 2CO. State the role of nitrogen dioxide in the formation of acetylene by oxide of sulfur. Write suitable equations to explain this role. Role of nitrogen dioxide oxidizing agent भी होता है और as a catalyst भी होता है. और catalyst भी homogeneous. Remember equation 1. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कन्वर्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड में और रिड्यूस हो जाएगा NO में. ठीक है. और क्योंकि वो मुझसे पूछे इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो मैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करूंगा और एसिड रेन बना के दिखा दूंगा. सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, इसको रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे.
इसके बाद वो कह रहे हैं suggest an equation to show how NO2 can contribute directly to acid rain. तो आपको लिखवाया था हमने NO2 है आपके पास, वाटर है आपके पास, इन दोनों को रिएक्शन करवाएं, it will turn to nitrous acid and nitric acid. तो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए. Explain how the uncontrolled use of nitrate fertilizer on land can lead to severe reduction in water quality in rivers. तो आप बताइए. Nitrates will leach out in river during heavy rainfall so this increases the amount of nitrate ions in river which is why unwanted growth of algae and fungi takes place. This prevents sunlight this decreases the deficiency of oxygen by preventing sunlight entering into the water. Thus, aquatic life is destroyed. The hydrogen halides can undergo thermal decomposition in a sealed container. An equilibrium is established according to the equation shown. Some bond energies are shown in the table. Use these data to calculate a value of enthalpy change for the thermal decomposition of HBr. Okay. HBr से related thermal decomposition हमने करना है. So we have 2 HBr H2 plus Br2 delta H equals to reactant minus product का फॉर्मूला होता है. डेल्टा H मुझे कैलकुलेट करनी है. रिएक्टेंट्स में HBr है जिसकी एनर्जी की वैल्यू 366 है. मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ. माइनस प्रोडक्ट हाइड्रोजन है 436 प्लस 193. सॉल्व कर लेते बेटा.
26 multiplied by 2, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 732 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 436 प्लस 193 629 732 minus 692 is going to be 40. कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा आप लोग 436 plus 193 629 732 minus 629 is 103. The calculation आप लोग चेक कर लीजिए because calculator इस वक्त है नहीं मेरे पास, ठीक है. At a temperature of 700 Kelvin, a sample of HBr is approximately 10% decomposed. Changes the temperature affect both the rate of decomposition and the percentage. The rate and percentage decomposition. The Boltzmann distribution for sample of HBr at 700 Kelvin is shown. EA represents the activation energy for the reaction. Using the same axis, sketch a second curve to indicate Boltzmann distribution at a high temperature. High temperature पे Boltzmann distribution देखना है. तो ये आता है. इसको लेबल कर देते हैं यहाँ पर हम. High temperature. Okay, with reference to the curve and explain, state and explain effect of increasing temperature on the rate of decomposition of HBr. आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. So more molecules have energy greater than activation energy. Thus, rate of decomposition of HBr increases. The decomposition of HBr is endothermic. That's an important statement. State the effect of increasing temperature on the percentage of HBr that decomposes. Use Lee-Shuttner's principle to explain your answer. Increasing temperature increases the percentage decomposition this is because increasing temperature
causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards right hand side because forward reaction is endothermic. At 700 Kelvin, HBr is approximately 10% decomposed, but hydrogen iodide is approximately 20% decomposed. Explain this difference with reference to bond strength and the factors that affect them. तो आप बताइए iodine has larger atomic radius than bromine. So Hi has longer bond length than HBr, which is why bond energy of Hi is lower than HBr. Next, at temperature above 15 Kelvin, HCl will decompose. A sample of 0.3 moles of HCl decomposed in a sealed container. The resulting equilibrium mixture was found to contain this much moles of chlorine. Calculate the amounts in moles of hydrogen and HCl present in the equilibrium mixture. मुझे moles of chlorine given है. आप जानते हैं यहाँ पर रेशियो 1:1 का है. अगर क्लोरीन के मोल्स गिवन है तो हाइड्रोजन के भी मोल एक्जैक्टली वही होंगे. तो हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे 1.50 into 10 to the power minus 2. इक्वेशन ले लेते हैं 2HCl एरो H2 plus Cl2. ये इनिशियली 0.3 है आपके पास, ये भी 0, ये भी 0. ये 1.5 into 10 to the power minus 2 है, तो ये भी आपके पास 1.5 into 10 to the power minus 2 होगा. ये 0.3 है, इसमें से 1.5 into 10 to the power minus 2 कर दीजिए. तो बताइए मोल्स ऑफ HCl at equilibrium कितने आ जाएंगे आपके पास. देखिए आपके पास है HCl और क्लोरीन, इन दोनों में रेशियो है 2:1 का. अगर ये 1.5 into 10 to the power minus 2 मोल्स थे, तो ये कितने होंगे. ये 0.03 मोल्स, यानी HCl से इतने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं. ठीक है, मोल्स ऑफ HCl reacted. सो बच कितने जाएंगे. मोल्स ऑफ HCl at equilibrium कितने होंगे. जो जगह आपके पास 0.3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 0.03 से. सो बेटा
ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.27 मोल्स, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास 0.27 मोल्स। ओके, यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये जगह 0.27 प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो आपके पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ से 0.3। वो आपसे कह रहे हैं calculate the mole fraction of each gas in the equilibrium mixture। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, यानी HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है मैंने। तो मोल्स ऑफ गैस हो जाएगा विच इज 0.27, टोटल मोल्स हो जाएगा विच इज 3। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है मेरे पास 0.9। इसी तरह से मेरे पास हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ गैस 1.5 into 10 to the power minus 2, टोटल मोल्स जो है वो आपके पास 0.3 है। सो आपके पास कितने आ जाएंगे यहाँ पर 0.05। सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी यही होगा 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 0.3, ये हो जाएगा 0.05। सही, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl मेरे पास है 0.9, फिर है 0.05, फिर है 0.05। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। In another experiment under different conditions, an equilibrium mixture was produced with mole fraction for each species as shown. Write the expression for the equilibrium constant Kp for the decomposition of HCl। ये हो जाएगा आपके पास partial pressure of hydrogen into partial pressure of chlorine over partial pressure of HCl power square। Explain why the total pressure of the system does not need to be known for Kp to be calculated for this experiment। It's because कि यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं 2, यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Because reactants and products have same number of moles। Calculate the value of Kp। Kp की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, पॉइंट 0.06 का स्क्वायर ओवर 0.08 आई बी 0.887। इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि 2 मोल्स हैं। तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4.64 into 10 to the power minus 3। यहाँ पर लिख देते हैं 4.64 into 10 to the power minus 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं आपसे hydrocarbon A and B are both unbranched। A does not dechlorize aqueous bromine, B dechlorize aqueous bromine and shows chemical measurement। Draw the structural skeletal formula of A। CH3 CH2 CH2 CH2।
that is your butane. The hydrocarbon AC4H10 is a branched isomer. So this is why unbranched A has a higher boiling point than branched. तो आप बताइए. This is because unbranched A has a higher surface area than its branched isomer. Which is why A exhibits strong van der Waals forces to overcome such forces. You need less amount of energy. You need more amount of energy. With the structural formula of B, अगर B का structural formula है तो ये हो जाएगा CH3 CH double bond CH CH3 क्योंकि उन्होंने कहा वो geometrical isomerism शो कर रहा है. Explain why B shows geometrical isomerism. Because two similar hydrogen atoms are present on the same side of the carbon atom. Also, due to the restricted rotation of double bond around its axis. अगर किसी बच्चे ने हाइड्रोजन एटम की जगह मिथाइल ग्रुप लिया तो वो भी करेक्ट होगा. ठीक है. Draw the mechanism of the reaction of B with bromine. Include all relevant charges, curly arrows, lone pairs, and dipoles. ठीक है. CH3, CH double bond, CH and then CH3. और ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा Br2. ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल्स. ये इससे रिएक्शन करेगा एट द सेम टाइम यहाँ से ब्रोमाइड चला जाएगा. ये आ जाएगा CH3 CH Br. ये हो जाएगा CH प्लस CH3 और ये है आपके पास Br माइनस और ये लोन पेयर. आपने इन दोनों के साथ रिएक्शन करना है और रिएक्शन करके आपने प्रोडक्ट बनाना है. CH3 CHBr CHBr CH3. ठीक है. Explain the origin of dipole and bromine in this mechanism. तो आप लिखिए the pi bond of alkene
reduces the dipoles on bromine molecule. Okay. Alcohol C and D are isomers of each other with the molecular formula C for H10O. Both isomers are branched. When C is heated under reflux with acidified potassium dichromate, no color change is observed. इसका मतलब ये जो C है आपके पास ये tertiary alcohol है because tertiary alcohol oxidize नहीं होता, इसलिए कोई observation भी नहीं आया. When D is heated under reflux with acidified potassium dichromate 6, color of the mixture changes from orange to green, and this is produced. एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन हो रहे हैं और हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है. So either D can be secondary alcohol or D can be primary alcohol. अगर secondary alcohol होता है ये तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होती, एक से ज्यादा ऑक्सीजन इंक्रीज होती है, इसका मतलब D should be primary alcohol क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज होता है. कंफर्म कर लेते हैं. E reacts with aqueous sodium carbonate to form carbon dioxide. कंफर्म हो गई ये बात कि this E contain carboxylic acid, which means D has primary alcohol. To identify C, D and E. तो C हो गया आपके पास tertiary alcohol, CH3, C, CH3, OH. E हो गया आपके पास ब्रांच चेन अल्कोहल प्राइमरी, उन्होंने ब्रांच बोला हुआ है तो ये हो जाएगा CH3, CH2, OH. और जब आप CH2OH को ऑक्सीडाइज करेंगे इट विल टर्न टू COOH, तो ये आपके पास E हो जाएगा. Write the equation for the reaction between E and with aqueous sodium carbonate. Okay, ये है आपके पास. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4. Hydrogen atom है 3 plus 3, 6, 7, 8 and 4, 2. और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से. कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, सॉल्ट में. क्योंकि दो सोडियम है इसलिए यहाँ पर भी 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा तो ये हो जाएगा C4H8O2 and 8. Isomer F and G both have formula C5H10O. Both forms an orange precipitate when reacting with 2,4-D NPH. या तो ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, या ये दोनों के दोनों कीटोन है, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है. आगे बढ़ते हैं. F is unbranched, reacts with alkaline aqueous hydrogen. मतलब F के अंदर CH3 CO ग्रुप एक साथ होगा जब भी तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब F is a ketone जब भी वो 2,4-D NPH का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा था. G does not react with alkaline aqueous hydrogen. इसका मतलब G में CH3 CO ग्रुप एक साथ नहीं है. It contain a chiral center. अगर chiral center है and produces a silver mirror with tolerance to it, इसका मतलब ये aldehyde होगा. So F confirm हो गया ketone है, CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है. G जो है वो आपका aldehyde है with a chiral center. Name the yellow precipitates produced by the reaction between F and alkaline aqueous hydrogen. तो भाई yellow precipitates होते हैं dry iodomethane. With the structural formula of F, बेटा F आपके पास है CH3 CO CH2 CH2 CH3 5 carbon atoms 1 2 3 4 5. ओके G देखिए CH3 CH2 CH3 and then CHO, chiral carbon. Explain the term chiral carbon.
4 different groups are attached. H and I are isomers with molecular formula C4H2, C2H4O2. The infrared spectrum of H and I are shown. ये पूरा का पूरा रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप को। So, ये हो गया आपके पास COH और ये हो गया CO। इसका मतलब जो H है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है आपके पास I में, ये CH को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप को। ओके, identify the bonds responsible for the principal peak above 1500 in each spectrum. Spectrum of H, 1600, 1700, सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर COH ग्रुप है, यहाँ CH है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है 720 सेंटीमीटर इनवर्स पे। नेम H and I। एक बात तो तय होगी, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आई मीन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये उसका आइसोमर है, तो इसका मतलब दिस आइसोमर मस्ट बी एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर हमेशा एस्टर होता है। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इज इथेनोइक एसिड, ठीक है, और 2 कार्बन का एस्टर इज HCOOCH2। I hope it makes sense to you। और वो नेम कह रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथानोइक।